morning, friends, and welcome back. So today is Sunday and I'm leaving back for Mumbai, and I'll have my breakfast. तब तक आप लोग टाइम लैप्स देखो, and then I shall leave for Mumbai. Left from Hubli and reached Belgaum, and currently on the Belgaum bypass, and almost covered a distance of 100 kilometers, I guess so. The roads are smooth up till Belgaum. Is approximately 331 kilometers. Which would require, I guess, more 6 hours. The toll road ends, so I suspect कि अभी divergence चालू हो जाएंगे, which troubled me a lot while coming. अभी नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स के लिए खाली डाइवर्जेंस ही होने वाले हैं, तो मिलते हैं जब भी कुछ दिखाने लायक हो। पिछले 300 किलोमीटर से बस यही हाल चल रहा है। There are approximately 2 to 3 diversions within 10 kilometers, and the traffic तो इतनी लंबी है, पूछो मत। If you can see the traffic, वो दूर तक है। complete gridlock.
है ना यहाँ से रास्ता? वो क्या फंस गया ना उधर? वो ऑफ रोड नहीं कर पा रहे, फंस गई ना गाड़ी, एक चढ़ नहीं पा रही है वो। तो तुम इधर से बाहर निकल गई। वहाँ पर एक गाड़ी फंस गई है, ये रेड वाली। निकाल के क्या लोग? निकल गई। ब्रेजा निकल गई। ब्रेजा फंस गई। फंस गए। One eternity later. गिरा। इसके लिए तो ये गाड़ी पसंद है मेरे को। So we are 70 kilometers away from Pune and I'm not driving right now. My dad is driving. So मिलते हैं कुछ किलोमीटर्स बाद। Meanwhile. Finally reached home. If you have liked anything in this video, don't forget to hit the like button. नहीं हो subscribe करो. With that said, good night, tata, bye bye. See you all in the next vlog. Bye.